The last product is the product जो मेरे पास सालों से है and I still swear by it or nobody can take its place, and that is Hello guys, how are you all, and welcome back to my channel. And today I'm here with a very exciting video. I thought let's make a series of videos in which I'm going to tell my top pick products for each makeup category. So what I'm going to tell you about my top picks, it's not going to be अच्छा मुझे ये भी बहुत सारे पसंद है, मुझे ये भी बहुत पसंद है, नहीं. It's going to be maximum 2-3, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि I don't want to bombard you with so many choices. It's going to be like my favorite pick. So it is actually going to be like my favorite pick. It's going to be 2 or 3, not more than that. So it's going to be a more simpler choice for you as well. क्योंकि obviously ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे सिर्फ एक चीज़ पसंद आए. मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद आ सकती हैं. कुछ के फॉर्मूलाज अच्छे हैं, कुछ के शेड्स अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. डिपेंडिंग ऑन ओकेजन्स आई यूज़ देम. बट व्हाट आई थॉट कि सिर्फ मुझे 2 या 3 प्रोडक्ट्स हों, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आई डोंट थिंक इट फॉल्स अंडर माई टॉप पिक्स. सो दैट्स द आइडिया. आई होप आप लोगों को आइडिया पसंद आए. फॉलो मी फॉर दिस सीरीज एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आई नो आई शुड स्टार्ट विद लाइक moisturizers, primers, everything, but it's just me. I thought let's just start with my favorite product category, which is blushes. Yes, I love a very good blush. Even मैं जब कुछ भी नहीं लगाती हूँ, I would say on my face, on a bare face, I always put on a blush. Yes. So I wanted to start off with a Pakistani brand which I dearly love, and some of the products are from that line which I absolutely love, and I wanted to start with my own Pakistani favorite brand, because obviously जो दूसरे हैं वो थोड़े से फोरा से हैं, international brands हैं, and I just wanted to give this shout out to a Pakistani brand which is doing so well. So it's going to be the Entice product. It's a serum blush. I love liquid blushes. What can I do? So when the Entice Cosmetics came with this serum blush, it comes in 2 shades. I know not a very big variety. It's obviously Pakistani. छोटी छोटी चीज़ों से start करते हैं, क्योंकि they spend a good amount of product on the quality. See, we are thriving. We are a newly forming, I would say, एक makeup space है, तो we should give this margin. But their blushes are absolutely a dream to work with. This is their shade Aura, and it's like a pinky blush, pinky peachy blush, which I absolutely love. And what I love about these blushes, not brushes, is मैं जितना भी इसको यूज़ कर लूँ. ठीक है guys, what happens, since it's a serum blush, it's very blendable, as well as what it is very kind of shears out. It's not just blendable, but it shears out. So अगर आपने बहुत ज़्यादा लगा लिया है, परेशान नहीं हो. इस ब्लश का सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है, it kind of shears out and gives a very beautiful finish. Next shade is again from this line. मुझे दोनों इसके shades पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. It's more of a neutral shade. Can you guys see? So this is the Aura one. This is the Celestial one. This is more pinkish, peachish color, and this is more on the bronzier, neutral side. Bronzy मैं नहीं कहूँगी. It's more of like a neutral color, and it's absolutely amazing. और आप देख भी सकते हैं मैं जिस तरह इसको मैंने spread out किया. It's very I would say it gives a very flexible margin, जिसमें आप बहुत अगर एक मेकअप नूब भी हैं, स्टार्ट करें, इट्स वेरी बिगनर फ्रेंडली. सो इट्स वेरी गुड. I absolutely love these blushes, और मैं उनको on the go, it's very easy, बहुत जल्दी से अपने मैं फिंगर टिप्स पे लगा के I'll just, और ये हो गया.
ठीक है, लिटरली मैं ये करती हूँ, डोंट जज मी बट आई डू दिस. नेक्स्ट प्रोडक्ट, इट्स गोइंग टू बी, आई गेस देयर इज नो second guesses because it's always going to be a rare beauty blush. It is absolutely amazing. What Selena did with this was amazing. I have the shade Bliss and it's going to go a very long time because one dot, literally one dot is enough, but I use this sometimes very heavily. Why? Let me tell you why. It is because it is a very light peachy color, so it gives you the margin of error in which you can apply generously but still make it workable. Otherwise अगर आप इनके darker shades लें और आपने वो 2 डॉट भी लगा लिए ना, आप एक बहुत प्यारे क्लाउन बन जाएंगे. But this product has its own pros and cons. कौन यही है, अगर ज़्यादा लगा लें बहुत मुश्किल हो जाएगा. ऑब्वियसली इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, बट ऑन द फ्लिप साइड इसकी पिगमेंटेशन की वजह से इट कवर्स फॉर अ वेरी आई वुड से वैरायटी ऑफ स्किन टोन्स, जिसमें बहुत लाइट है ना स्किन टोन से लेकर बहुत डार्क, डीप, मीडियम डार्क स्किन टोन्स को भी इट कवर्स एंड इट एक्चुअली शो. सो आई विल शो यू. इसको मैंने अच्छा खासा लगा लिया. इट इज़ अ वेरी लाइट कलर एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स देयर लाइटेस्ट शेड. मैंने अपनी फ्रेंड्स पे ये कलर यूज़ किया है विच हैज़, आई वुड नॉट से वेरी डीप कम्प्लेक्शन बट डीपर देन मी एंड इट लुक्स. और जब मैं उनको ये लगा रही थी, व्हाट दे सेड, नहीं ये हम पे अच्छा नहीं लगेगा, ये बहुत लाइट कलर है, तुम पे अच्छा लग रहा है, बहुत तुम पे अच्छा लग रहा है. मैंने कहा जस्ट सी एंड सी इट्स मैजिक. एंड व्हेन आई अप्लाइड टू देम, 2-3 मेरी दोस्तों को, एंड दे वर शॉक एंड दे वर लाइक दोबारा बता रहा शेड बिकॉज इट लुक्स सो नेचुरल, इट लुक्स सो गुड. नाउ विद दिस फॉर्मूला, दिस इज देयर मैट फॉर्मूला. इट कम्स इन अ रेडियंट फॉर्मूला एज वेल. बोथ आर गुड, इट डिपेंड्स ऑन यू. मुझे इसका मैट फॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है, रेडियंट भी अच्छा है, इट्स नॉट गुड, बट एज यू कैन सी फ्रॉम द स्वॉच, इट्स लाइक वेरी sheer. Can you see it? It is very sheer. मैंने अभी भी लगाया हुआ है, but just for the sake of this video, let's apply this again. मैंने यहाँ पे देख लें लगा लिया है, ठीक है जी. This is my blush brush and I will just stamp it. Please ये चीज़ है ना, ये वाली मूवमेंट ना कीजिए, स्टैम्प की किया करें जैसे आप कोई ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं. और आप देखें Why I like the matte formula more, क्योंकि आप पाउडर के ऊपर भी लगा सकते हैं and still it gels really well. And sometimes I do this and I take it along to my eye area as well, just to make it like more rosier. And can you see it? Like this and this. It's there. It's subtle, especially on camera शायद तो ज़्यादा ना लगे, लेकिन on face to face in real life it looks absolutely beautiful. बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत नेचुरल लग रहा है. It's one of my go-to shades and formula, Rare Beauty top pick. Like I said, it is those products which I can't live without. The last product is the product जो मेरे पास सालों से है and I still swear by it, or nobody can take its place, and that is the MAC blush in the shade Melba. It is, guys, absolutely beautiful. इससे खूबसूरत आपको कोई शेड नहीं मिलेगा. शायद इसकी हालत से नज़र आ रहा होगा कि मैंने कितना इस्तेमाल किया है, क्योंकि this is the shade I can use on heavy formal makeups, शादी के मेकअप पे, वलीमे के मेकअप पे, डे टू डे मेकअप पे, किसी भी तरह के मेकअप पे. This blush goes with every single look and it never gets boring. It's one of the products जिस पे मुझसे लोग पूछते हैं क्या लगाया है, and it's absolutely amazing. मैं इस वाले पे, क्योंकि why not, it's my favorite color
and it's very similar to the Bliss one. It's very similar, but it has just its own earthiness as well. Like this is very peachy. It has peachiness, but it has some earthiness as well, which suits so many. Like, can you see it? It's there, but it looks absolutely amazing. तो इसका शेड मेल्बा है, अगर नहीं बताया मैंने, जो कि मैंने बता दिया, बट स्टिल बहुत सारे दफ़ा मुझसे पूछा जाता है कि शेड बता दें. इट्स मेल्बा, इट्स ब्लिस, एंड दिस इज ऑरा, and the other one was celestial. So these are my favorite products in the blush product category. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, ये आइडिया, ये सीरीज पसंद आई हो, डू लेट मी नो नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी आपने चूज करनी है, ये आप मुझे बताएं, एंड आई विल फिल्म दैट फॉर यू गाइज. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब डाउन बिलो, एंड comment as well. Don't forget to click the thumbnail bell icon. ठीक है ना? इतनी सारी चीजें कि बंदा याद नहीं कर सकता है, क्योंकि जहन में जब मेकअप हो, you forget these things. But I will see you in the next video. Bye.